to express their creativity. Inside a computer simulation, any sport can become esport. Virtual NASCAR and F1 are already attracting top racers. Like sports, esports captures the thrill of victory and the agony of defeat, and the human drama of athletic competition. Esports is on its way to be the biggest sport. I have something special for all the GeForce gamers around the world. 4 gifts. I hope you like them, and you'll find new ways to game. First, big news. Fortnite is turning RTX on. Now Minecraft and Fortnite, the #1 and #2 most played games in the world, have RTX on. Fortnite will get ray trace shadows, reflections, ambient occlusion, and DLSS 2. हेलो गाइस, देखते हैं आपको आवाज आ रही है कि नहीं. एक मिनट देखो जरा आपको आवाज आ रही है कि नहीं. हेलो, माइक टेस्टिंग. Big news. The art style of Fortnite turning RTX on. Now Minecraft and Fortnite, the #1 and #2 most played games in the world, have RTX. ओके, लगता है सबको आवाज आ रही है, क्लियर है. वैसे भी कोई देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लेट्स गो. अभी एक बार देख लेते हैं, लास्ट बार चेक कर लेते हैं. गार्बेज विद RTX ऑन. ओके, यहाँ से थोड़ा आवाज आ रही है, क्लियर है. वैसे भी कोई देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लेट्स गो. ठीक है, अभी लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं, देखते हैं आवाज ठीक आ रही है कि नहीं. अभी एक बार देख लेते हैं, लास्ट बार चेक कर लेते हैं. गार्बेज विद RTX ऑन. ओके, यहाँ से थोड़ा आवाज आ रही है, क्लियर है. तो कोई देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लेट्स गो. ठीक है, अभी लास्ट टाइम चेक. ठीक है, अभी चलो देखते हैं. You can only hit this opponent. Okay. 50%. Reflex, In September, we're reflex, releasing Reflex with our game-ready driver. Okay. Over 100 million GeForce gamers. मतलब वो anti-lag जैसा है, जैसे अपना Radeon का था. Fortnite, Apex Legends, Call of Duty Warzone, and Destiny 2 will be the first to integrate Reflex technology. मैं अपने मोबाइल में कमेंट Esports पढ़ता हूँ. pros and enthusiasts strive for zero latency. For you, we're announcing an insanely fast and beautiful display. A 360 Hz G-Sync display designed for esports. This display has a built-in precision latency analyzer. Just connect your mouse. लॉटरी रहता है जो 240 हर्ट्ज का पैनल बनाते हैं, उसमें से थोड़ा सा कलकर अच्छा निकल जाता है. From Acer, Alienware, Asus, and MSI. We've made a video comparing gaming on a 60 Hz, 144 Hz, and 360 Hz display. You can see immediately how 360 Hz display will help you target and track an opponent. रुक जाओ, पहले बोलने दो उस लोग को. For the 20 million live streamers, we have something really cool for you. NVIDIA Broadcast turns any room into a broadcast studio. NVIDIA Broadcast runs AI algorithms trained by deep learning on NVIDIA's DGX supercomputer, one of the most powerful in the world. Effects like audio noise removal, virtual background effects whether graphics or video, and webcam auto-framing is a virtual camera person tracking you. These AI effects are amazing. Available for download in September and runs on any RTX GPU. लोग 60 FPS, Brandon and 144 GeForce FPS दोनों बराबर खेल show सकते हैं. you NVIDIA Broadcast. Hey everybody, I'm Brandon and I'm मेन very चीज क्या excited today to talk to you 144 about वाले our इतने अच्छे NVIDIA क्यों होते हैं, क्योंकि वो लोग Broadcast गेमिंग पे अपना app. करियर Like many of बनाते you, हैं और I've been पैसा home रहता है all उनके day, पास, doing video conferencing इसलिए वो लोग all day and 144 ले then रहे gaming थोड़ा and streaming all स्मूथिंग के लिए. night. And I have a very basic मैं webcam 60 में भी microphone डायमंड setup. पे था, NVIDIA 144 Broadcast में भी makes these डायमंड पे things हूँ. supercharged with a lot of new awesome features that really bring it out using the power of AI and RTX GPUs. The first one I want to talk about is noise removal. So I've asked my girlfriend to join me with a blow dryer here. And that distracting sound makes it very hard to understand what I'm saying. But when I turn on noise removal in NVIDIA Broadcast, you find that it's completely gone. That blow dryer is still going. ने भी बताया था. But NVIDIA Broadcast isn't just awesome audio features. There's some really exciting video features as well. Let's take a look. First up, we have the ability to blur your background, which you may notice that I need because I have a very cluttered and messy room. मेरे लिए But when अच्छा I turn this रहेगा. background blur feature on, all of a sudden I get this really classy effect. And I can adjust the strength of that लेकिन मेरे को वेबकैम from लेना low to पड़ेगा high उसके लिए. and everything in मैं between. सोचा मोबाइल से करूँगा. Or, if I want, I can actually replace the background altogether. Now I'm in a space station with the magic of AI. Reduce That FPS by half. Or, if I want to jump into some gameplay, I can remove the background altogether and jump into some Valorant. And now I'm playing with a green screen effect without actually having to have one at home.
I don't have to play good, but at least I can look good. Now, sometimes when I'm video conferencing or doing a just chatting stream, I want to zoom in to get a more personal connection with the audience. But the problem is I bounce around so much, it's easy for my head to get out of frame. With the auto frame feature, it's like having your own personal cameraman that follows you wherever you go. AI learning. So, if for example, I wanted to reach over and grab my cool Valorant hat AI learning. and show it to everybody, it follows me every step of the way. मत देखो I just तुम्हारा find ही नुकसान NVIDIA है, broadcast मत to be देखो really मेरे exciting, as both a streamer and as someone who works from home. The तो ability to खिचड़ी remove खा रहा distracting हूँ। noise, घी डाल के। improve your background, and keep yourself in the center of the frame are all awesome features in one app, and I just can't wait for you guys to try it. A new form of art has emerged from gaming called machinima. Artists are using game assets to create cinematics. Okay. There's been tens of billions of views on YouTube. Most are shorts. अभी Some नया are even technique से recreating polygon बनाएंगे entire लोग। classic movies. It's becoming a whole new art genre. Today, I'm going to show you an app that will make these cinematics amazing. It's called NVIDIA Omniverse Machinima. It's an app built on our Mountain Omniverse 3D workflow collaboration platform. Omniverse is a universal design tool asset exchange with a viewer based on photorealistic path tracing. The engine is designed to be physically accurate, simulating light, physics, material, and artificial intelligence. We have connectors for most third-party design tools, like 3ds Max, Maya, Photoshop, Epic Unreal, Rhino, and many more. The Machinima app brings in elements and assets from games and third-party collections like TurboSquid and lets you mix and compose them into a cinematic. Creators can use their webcam to drive our AI-based post estimator to animate characters. Okay. Drive face animation AI with your अभी voice. AI पका Add high-fidelity physics like particles and DLSS जब fluids. गेमिंग का दिखाएगा मैं Make हूँ materials ready, बस physically थोड़ा सा मान accurate. लेके आ रहा हूँ। And then when done with your composition and mixing, render film quality cinematics with your RTX GPU. NVIDIA Omniverse Machinima. Beta in October. Sign up at nvidia.com/machinima. Let me show you a demo we created in a few days. We started with assets from Mountain Blade 2, Banner Lord. You're gonna love this. Whoa, that was close. You guys are getting better. For 40 years, since NVIDIA researcher Turner Whitted first published his paper on ray tracing, computer science researchers have chased this dream to create super realistic virtual worlds with real-time ray tracing. NVIDIA, seeing the ultimate limits of rasterization approaching, focused intense efforts over the past 10 years to realize real-time ray tracing on a large scale. At SIGGRAPH 2 years ago, we announced the NVIDIA RTX. Now 2 years later, it is clear we have reinvented computer graphics. NVIDIA RTX is a full-stack invention. RTX starts with a brand new GPU architecture, but it is so much more. It includes new engine tech and a bunch of new rendering algorithms. RTX is a home run. All major 3D APIs have been extended for RTX. RTX is supported by all major 3D tools. RTX tech is incorporated into all major game engines. There are hundreds of games in development and thousands of research papers of new rendering and AI algorithms enabled by RTX. The RTX GPU has 3 fundamental processors: the programmable shader that we first introduced over 15 years ago, RT Core to accelerate the ray triangle and ray bounding box intersections, an AI processing pipeline called Tensor Core. Tensor Core accelerates linear algebra that is used for deep neural network processing, the foundation of modern AI. DLSS type का। AI is the most powerful technology force of our time. Computers that learn from data and write software that no humans can. The advances are nothing short of breathtaking. NVIDIA is doing groundbreaking work in this area. You might have seen our work in self-driving cars and robotics. Computer graphics and gaming will also be revolutionized by deep learning. Let me show you some recent works and the art of the possible.
The first video is a generative adversarial network that has learned to synthesize virtual characters of any artistic genre, including photorealistic. Second is a neural network that animates a 3D face directly from voice. You require more Vespine gas. It's dangerous to go alone. Take this. The AI character can speak in any language, be any gender, It's and even dangerous rap to and go sing. alone. Take this. Third is a character locomotion of infinite number of positions. Imagine negotiating arbitrary paths and obstacles. The fourth is reconstructing 3D from video. Imagine the possibilities. Record video, interact in 3D. This one is a deep learning model that learned the physics behavior of cloth animation. Finally, this deep learning model of ray tracing can predict colors of missing pixels, so that fewer rays need to be cast and fewer pixels need to be fully rendered. We can achieve orders of magnitude speedups. Okay, कोई देख रहा है मेरा? AI is लगता है मैं ही certain to देख play रहा a हूँ giant मेरा। role in the future of computer graphics and gaming. The powerful tensor cores and RTX GPUs will let us do AI in real time. One of the first major AI computer graphics breakthroughs भाई मेरे दोस्त कौन is देख रहे हैं? जरा DLSS. कमेंट कर दे, मैं देख रहा हूँ। Here's the challenge. Mobile Real-time ray tracing is far more beautiful but requires a lot more computation per pixel than rasterization. So the solution is साथ to में ray मिलकर बात trace करते हैं fewer पूरी स्ट्रीम pixels में। and use AI on tensor cores to up-res to super-res to a higher resolution and boost frame rate. DLSS took nearly 2 years of intensive research. We built a supercomputer to train the network. The DLSS model is trained on extremely high quality, 16K, offline rendered images of many kinds of content. Once trained, the model is downloaded into your driver. At runtime, DLSS 2.0 takes in low resolution, aliased image and motion vector of the current frame, and the high resolution previous frame to generate a high resolution current frame. I think DLSS is one of our biggest breakthroughs in the last 10 years. Take a look at these images of Death Stranding, the latest game by Kojima-san. 8K पे खेल सकते हो तुम। DLSS is sharper 2080 Ti than पे। native 4K Yes, and created मैं जानता detail हूँ। from AI that native rendering didn't even show, हाँ, didn't even and the show, frame yes। rate is higher. DLSS नया वाला बहुत Reviewers have game loved changing है। DLSS 2.0. उसको They जोड़ say दिया its जाए तो quality 1080 beats out Ti native rendering and और runs even 980 faster. Ti गैप You can बराबर play कर at देगा। 4K without a और उससे भी performance hit. ज़्यादा। Tensor Core effectively gives RTX a 2x performance boost. Let's look at one frame trace of a game to see the processors of RTX in action. Adding ray tracing to games dramatically increases the computation workload. Using shaders to do ray traversal and object intersection reduces the frame rate. We added the RT core, which reduces shader workload by 60%. RT core offloads the shaders by doing the ray triangle and ray bounding box intersection calculations. Using the same methodology as Microsoft Xbox, the RT core is effectively a 34 teraflop shader, and Turing has an equivalent of 45 teraflops while ray tracing. Even with RT core, the amount of time 45. consumed is significant. Wait a So second. RT core and shaders have to run concurrently. Even then, 20 milliseconds is only 50 frames per second, and still a step back in performance relative to previous generations. This is मतलब where अगर the अच्छे Tensor से Core and किया है लोग ने DLSS come in. 42 Rendering to a lower 42 resolution, 3 गुना then हो गया अगर using अच्छे से AI कर and दिया तो ये super लोग ने fast Tensor Core DLSS to को। effectively double frame rate. Now you can get ray tracing, get high resolution, यानी मतलब and 50% high frame faster rate at the same time. 50% faster That's the next magic generation of the three 50%. processors of RTX. Turing was our first generation RTX GPU, combining ray tracing, programmable shading, and AI. The flagship Turing had a ton of processing power. 11 shader teraflops, 34 RT teraflops, and 89 tensor teraflops. Let me show you our new RTX GPU. Ampere is a giant leap in performance. Ampere does 2 shader calculations per clock versus 1 on Turing. 30 shader teraflops compared to 11. Ampere doubles ray triangle intersection throughput. Ampere's RT core delivers 58 RT teraflops compared to Turing's 34. And Ampere's new Tensor Core automatically identifies and removes less important DNN weights. And the new Tensor Core hardware processed the sparse network at twice the rate of Turing. 238 tensor flops compared to 89. Ladies and gentlemen, NVIDIA's new Ampere GPU, our second generation RTX, 28 billion transistors built on Samsung 8N NVIDIA custom process. All 3 processors
double rates लगा over TSMC होगा, triple double. Samsung निकला. It connects to यानी Micron's new मतलब 1 साल wait G6X, करना the पड़ेगा fastest अच्छे memories CPU के ever लिए. made. The days of just कभी relying लोग on का power का transistor problem आ performance रही है. scaling is over. 400 watt. Yet Ampere is an incredible 2 times the performance and energy efficiency of Turing. अगले साल At इंतजार करो. NVIDIA will use TSMC के लिए every खरीदेगा engineering NVIDIA. lever to squeeze every drop of performance out of the system. From architecture, custom process design, circuit design, logic design, packaging, custom SerDes I/O, memory, power and thermal design, कोई बात नहीं, Big PCB Navi के बाद design, देखेंगे. software and algorithms. Thousands of engineers per generation, billions of dollars. Full stack engineering and extreme craftsmanship is the hallmark of our GPUs. Our performance, energy efficiency, and low power are all world class. And real application performance highlights Ampere's new RT core. The more ray tracing is done, the greater the Ampere speedup. Ampere RT core doubles ray intersection processing. Its ray tracing is processed concurrently with shading. And Ampere can render cinematic images with motion blur 8 times faster than Turing. Let's take a look at Ampere in action. At our kitchen GTC a few months ago, we showed Marbles, the world's first fully path-traced, photorealistic real-time graphics. It was running on our highest-end Turing Quadro RTX 8000. Turing was doing 720p, 25 frames per second. Today, we're going to run an enhanced version of Marbles with even more special effects. And it is running at 1440p, 30 frames per second, 30. over 4 times the performance. Ladies and gentlemen, enjoy Marbles at night. यही है अपना फ्यूचर. मार्बल को देखते रहो, रे ट्रेस करके. ध्यान से देखो, तुम्हारे वायलेट भी रे ट्रेस हो रहे हैं. अंदर शैडो दिख रही है, कुछ भी नहीं है. इतना फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि तुम्हारे पर्स में नोट नहीं रह जाएगा. इसलिए इतना फास्ट रेंडर हो रहा है. हाँ भाई दीपक, देखते हैं क्या होता है. 720p पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा डेटा ना जाए जिसका रहे. सीधे तो 480 पे भी करके देख सकते हैं, देख रहा हूँ. काश अपने पास भी इतना फालतू टाइम होता है ये सब करने का. Marbles is entirely path traced. No rasterization, all real time. ओके ओके, समझ गया. इसी समय वो लोग There बना are भी रहे hundreds of area lights, पार्ट ट्रेस. including मतलब वो लोग spherical इसी area वक्त कर रहे lights. हैं, इसी वक्त. Pre-baking, everything is dynamic. पहले से नहीं ये वीडियो चल रहा है, इसी वक्त वो पार्ट ट्रेस कर रहा है खुद से. The depth of field is film quality and beautiful. अभी मेरे फोन में 480p नहीं लिमिटेड है. Diffuse GI, all मैं dynamic. 1080p देख सकता There हूँ. are hundreds of rigid bodies, 80 million triangles. Materials are physically accurate, physics simulation and volumetric rendering in real time. DLSS 2.0 is doing the super resolution and AI denoising. अब इसमें DLSS लगाए ना, मतलब तो डबल परफॉर्मेंस हो सकता है वो टेंसर कोड से. छोटा फ्रेम दिखाएगा लेकिन इंसान की आंख को सही सही दिखता है. अपने लिए बहुत फायदा है वो. Let's compare Marbles Turing and Marbles Ampere. You can see dramatic visual quality jump of Ampere. Okay. Marbles on Turing runs at 720p, 25 frames per second. Marbles on Ampere runs at 1440p, 30 frames per second, more than 4 times the performance. And Ampere even did area lights and depth of field. A giant performance leap. Today's games are giant worlds, indoor and out, with photogrammetry, dense geometry, and lots of characters. Games are over 200 gigabytes and getting bigger. This is like 50,000 songs or 400 hours of streaming video. Games that push PC I/O and file systems to the breaking point.
CPUs copy files from disk क्या and कर सकते decompress the डेटा game पे image. नहीं है तो for it. This is fine when the storage system was slow, 50 to 100 megabytes per second. Now with Gen 4 PCI Express and solid-state drives, PCs can transfer Gen 4 data सिर्फ at AMD 7 के लिए आया है। gigabytes per second, वो भी 100 3000 times series faster. का motherboard. CPU copying data to memory and decompressing game images is now the bottleneck. Decompressing data from 100 megabytes per second hard drives takes only a few CPU cores. However, decompressing from 7 gigabytes per second SSDs on PCIe Gen 4 takes over 20 CPU cores. Today, we're announcing NVIDIA RTX I/O with 3 new advances. New I/O APIs for fast loading and streaming directly from SSD to GPU memory. Okay. GPU lossless decompression. Okay. And collaboration with Microsoft on direct storage for Windows that streamlines the transfer of data from storage to GPU memory. अरे माँ. With NVIDIA RTX I/O, vast worlds will load VRAM की instantly. जरूरत नहीं पड़ेगी इतना. Picking up where you left off will be instant. This is a very big deal for next generation. अगर तू gaming. solid state drive Let me लगा show देगा you ना Ampere in NVMe action वाला, in one of the most तो तेरा वो anticipated video games RAM of बन जाएगा. 2020. CD Projekt Red's Cyberpunk. This trailer is called Scenes of Cyberpunk RTX. It shows हाँ, ray खाना trace खा रहा था. reflections, खा diffuse लिया. illumination, shadows, ambient occlusion, and DLSS 2.0. चलो. Enjoy. अब enjoy करते हैं. देखिए. ये स्ट्रीमिंग है इसलिए पूरा अच्छी क्वालिटी नहीं दिखाएगा. स्ट्रीम का भी स्ट्रीम है. मतलब अगर मैं संडास को भी देखूंगा ना संडास में मेरी आंख में संडास देख सकता है. रे ट्रेसिंग का मतलब रिफ्लेक्ट करेगा. Ladies and gentlemen, our new flagship GPU, the NVIDIA GeForce RTX 3080, 3090 नहीं. powered by Ampere, ओके चलो कोई बात नहीं. second generation ये RTX छुपा के रखा architecture. है. 3090 भी आज ही लॉन्च करेगा मेरे को पता है. बाद में दिखाएगा. 3090 का रूमर बहुत पहले से आया था कि 3090 आ चुका है. दीपक आवाज बहुत फट रही है कि माइक बहुत स्वाइसा आवाज आ रही है क्या मेरे? सॉरी मैंने कम किया था. नहीं थोड़ा सा कम करता हूँ ना मेरी आवाज देखते सब डिफॉल्ट. अभी ये देखना दीपक का खतरनाक रहेगा. सबसे खतरनाक. आगे पीछे दोनों फैन रहेगा. डाई साइज इंक्रीज. एक आगे और एक पीछे. पीछे 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 90 GB पर सेकंड. PCI 3 खत्म. अब PCI 4 जनरेशन आ जाए. थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है. हाँ अभी शायद मेरी आवाज़ नहीं देगी वरना बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा. नीचे वाले चिल्लाएंगे. एक बोला ना आगे पीछे दोनों फैन आएगा. अब ये कूलर ही $150 का बना. एक ये लोग ने ये कूलर पता क्यों बनाया क्योंकि इंटेल अपना AMD और NVIDIA का झगड़ा हो गया. मतलब TSMC का NVIDIA से झगड़ा हो गया तो उसने सैमसंग से खरीदना पड़ा मजबूरी में 8 नैनोमीटर पे. 8 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर दोनों में बहुत फ़र्क है क्योंकि वो 7 नैनोमीटर TSMC ने बनाया तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है. इसीलिए ये लोग में हीट ज़्यादा बनता है. इसलिए लोग को कूलर में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा. और AMD इस साल देखना सबसे बड़ा हाथ मारेगा लोगों को. इसीलिए देखे NVIDIA इतना भारी बना के रखा है ग्राफिक कार्ड. The NVIDIA RTX 3080. तो देख उसका I साइज have one देखना. right here. Let me show it to you. फेंक के मारेगा मर जाए इंसान. अरे देख जरा कितना बड़ा है और कितना मोटा है. It is beautiful. Look at this. The RTX 3080. It is wonderfully crafted. It's going to look beautiful in your PC and it lights up. Now let me tell you about some of the other exciting technologies inside. Turing used G6, the fastest memories at the time.
Okay. The industry thought that was the limit. GDDR6. For Ampere, we had to push through that limit. HBM Working with Micron, we designed the world's first memories with PAM4 signaling, pulse amplitude modulation, with 4 voltage levels that encode 2 bits of data each, 0001, 1011. Each voltage step is only 250. मैं बोला था ना सैमसंग के 8 नैनोमीटर So in पे the same बनेगा period of time, ये लोग का झगड़ा हुआ था G6X can TSMC transmit से twice as much data as आज ये लोग को G6. भारी पड़ रहा है PAM4 इतना is बड़ा कूलर extreme बनाना पड़ा signaling technology, and it's just becoming used in high-speed networking. The Ampere thermal architecture is the first ever flow-through design, working harmoniously with PC chassis cooling system, pulling in cool air from the तो मेरे outside, पीसी में flowing through the GPU, कोई हवा and pushing निकलने की hot जगह air नहीं है straight out the chassis. To अजगर allow जैसा room for a बैठा है fan to flow air directly through the module, our engineers architect a super dense PCB design that is 50% smaller than previous, while adding the bigger Ampere GPUs, HDMI 2.1, PCI Express 4.0, and G6X. There are 2 independently controlled fans. The bracket front fan pulls cool air from the bottom and pushes the heated ये air दो out फैन through इसलिए the लगाया क्योंकि graphics मेमोरी card मॉडल brackets. उन्होंने A दूसरे backside साइड लगाया pull-through fan ताकि passes हीट cool ज़्यादा air ना over the बने fins of the heat pipe and directs the दूसरा hot air to the सिर्फ top मेमोरी and के लिए back लगाया of the लोग ने chassis to be exhausted by the system fan. The 3080 बताते नहीं है flow-through लोग system is 3 times quieter and keeps the क्योंकि GPU 20 degrees cooler उसे वो than लोग the का Turing बदनामी design. होगी But सिर्फ it can एक cool मेमोरी के लिए 90 लगाया है watts इतना more हीट than होता है Turing. The generational leap is ultimately the most important factor of new GPUs. A significant main technology DLSS advance है is needed to inspire अगर हर content चीज में developers to लग create गया the next level of तो सब content निकाल लेगा and for the install base to upgrade. Let's see how the 3080 stacks up to previous generation architectures on the latest graphics intensive games. देखो काफी कम है 3080 is faster than 2080 Ti. 3080 is twice the performance of 2080 at the same price. Ampere is the biggest generational leap we've ever had. Ladies and gentlemen, NVIDIA GeForce RTX 3080, 22 our new flagship GPU, powered by Ampere, our second generation 100% RTX यानी GPU architecture. अरे माँ Incredible amounts of processing in the shader, 65% RT ray tracing core, fast and tensor core for 65 processing AI. 10 gigabytes of G6X, twice the processing power of 2080, 950 and at the 65% same faster लगभग price, 70 starting at वो भी $699. बिना DLSS के Available September 17th. One of our most popular GPUs is the 70 series. 970, 1070, 2070 were all hugely popular. You're going to love the new RTX 3070. Faster than the 2080 Ti, the Turing enthusiast GPU priced at $1,200. Ladies and gentlemen, the new GPU priced at $1,200. नहीं इसका बता Let me show it to you. Ladies and gentlemen, the new G4. Let me show it to you. It's a work of art. 20 shader teraflops, अरे मार लग गया 40 RT teraflops, okay and 40 163 उसका 34 teraflops tensor core for AI processing. With 8 gigabytes of G6, RTX 3070 is faster than the $1,200 RTX 2080 Ti, प्राइस कितना है 1200 starting at $499. Available in October. Every generation, we pack in our best ideas to increase performance while introducing new features that enhance image quality. Every couple of generations, the stars align, as it did with Pascal, and we get a giant generational leap. Pascal was known as the perfect 10. Pascal was a huge success and set a very high bar. It took the super family of Turing to meaningfully exceed Pascal on game performances without ray tracing. With ray tracing turned on, Pascal, using programmable shaders to compute ray triangle intersections, fell far behind Turing's RT core. And Turing with ray tracing on reached the same performance as Pascal with ray tracing off. On a technical basis, this was a huge achievement. The images are far more beautiful, and reflection and shadow artifacts are gone. But gamers wanted more. They want every generation to be more realistic and higher frame rate at the same time. So we double down on everything. Twice the shader, twice the ray tracing, and twice the tensor core. The triple double. Ampere knocks the daylights out of Pascal on ray tracing. And even with ray tracing on, crushes Pascal on frame rate. To all my Pascal gamer friends, it is safe to upgrade now. Amazing ray tracing games are coming. Activision and developer Treyarch are launching a new Call of Duty on November 13th.
It's a masterpiece and it looks incredible. There are dynamic lights, ray tracing, shadows and ambient occlusion, DLSS 2.0, and NVIDIA Reflex super low latency technology. The last Call of Duty sold an amazing 30 million copies. Activision put together this trailer of never before seen footage. Enjoy. Tiananmen स्क्वायर वाला तो हटा दिया उसने चाइना का विरोध जो चाइना में हुआ था विरोध चाइना की फट गई थी तो उसने कॉल ऑफ ड्यूटी का ट्रेलर हटा दिया था उसमें वो तिनानमेन स्क्वायर था ना जिसमें एक इंसान टैंक के सामने खड़ा हो जाता है विरोध करने के लिए कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए वो डाल दिया था तो चाइना ने उसका ट्रेलर ही बोला कैंसिल कर दो वरना हम लोग चाइना में गेम ही कैंसिल कर देंगे और अमेरिकन डर के मारे हटा भी दिया ट्रेलर हाँ वही रिव्यू आएगा तब पता चलेगा मेन अबे डबल बहुत ज़्यादा होता है अब वो डबल वो लोग ने रे ट्रेसिंग लगाने के बाद है कि वो बिना रे ट्रेसिंग के पहले रे ट्रेसिंग के बाद है तो इतना मतलब नहीं मेरे को लेकिन उसके पहले तो भाई एकदम रॉ परफॉर्मेंस बढ़ गया Let me talk to you about one more thing. Several years ago, we started building the Titan, pushing the GPU to the absolute limit to create the best graphics card of that generation. It was built in limited quantities and only through NVIDIA. The distribution was limited. 7nm The demand surprised us. Creatives were making 4K movies, rendering cinematics. Researchers built workstations for data science and AI. Bloggers built broadcast workstations. 80% मार्केट शेयर लेके बैठा है NVIDIA. इंटेल से भी हाई इसका स्टॉक चला गया है. नंबर 1 पे सेमीकंडक्टर. That is available all over the world. So we made a giant Ampere. Ladies and gentlemen, the RTX 3090. Legendary 3090. अवन से निकालना पड़ेगा. ओह देखो. Alrighty. 3090 is a beast, a ferocious GPU, a BF GPU. 36 shader teraflops, 69 RT teraflops, 285 tensor teraflops, and it comes with a massive 24 gigabytes of G6A. इसके पहले 90 series 690 निकाला था. 3-slot dual active 690 निकला है. 10 times quieter and keeps the GPU 30 degrees cooler than the Titan RTX design. But there's more. The 3090 is so big that for the very first time, we can play games at 60 frames per second in 8K. This is 4K 60 नहीं कर पाता 8K 60 कर दिया. Because it's impossible for us to show you what it looks like on the stream, we invited some friends to check it out. Roll the clip. DLSS लगाने के बाद नहीं चाहिए मेरे को. अबे ये लोग को हटा है. मेरे को लोग शक्ल नहीं देखना सीधा गेम प्ले दिखा. अच्छा LG OLED अपना प्रचार भी कर रहा है. ऐसे चैनल लोग पता नहीं खेले भी होंगे कि नहीं. Oh, are you kidding me? Oh my gosh. Oh my god. जो रिएक्शन नहीं देखना. This is incredible, dude. मुझे बेंचमार्क देखना है. दोनों में DLSS लगा है इसलिए इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं. और DLSS हर गेम में नहीं लगा. Look at this. Why is it so detailed? All right. Move fast and shoot things. This is 8K, sir. I can see everything. Oh, I need to shoot you, though. Not a whole lot of people have seen something like this. This is so realistic. I feel like I'm really in battle. This is insane. Die, I want to look at the वही pretty बोला ना things. होगा हर गेम में DLSS लगा दिया AMD Dude, the ray खत्म. tracing is insane on this. DLSS The लगाना sizzle बहुत wheels that मुश्किल you है. see. गेम में बहुत कोडिंग करनी पड़ती है. And then it's तो like, लगा it'll दिया never गेम look खत्म like that, AMD का. but it does. AMD को नया अपना बनाना पड़ेगा. एक साल पूरा गैप देके DLSS से टक्कर लेने के लिए. डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग DLSS का This मतलब. feels like a Disneyland Deep learning super experience. sampling. Oh, it is so मतलब तेरा 520 की पी की इमेज रहेगा उसको 1080 पे करके देखेगा तो भी तेरे को ऐसा लगेगा कि 1080 है. There's no other way सोच to put it. कितना परफॉर्मेंस बढ़ जाता है. सोच तू PUBG खेल रहा है 720 पे और तेरे को दिखा रहा है 1440p पे और तेरे को लग रहा है दोनों It's सेम been ही है. 20 years since the NVIDIA GPU introduced programmable shading. The GPU revolutionized modern computer graphics. Developers jumped on and invented clever algorithms, like shaders that simulate realistic materials, or post-processing effects for soft shadows, ambient occlusion, and reflections. Developers pushed the limits of rasterization beyond anyone's expectations. Meanwhile, NVIDIA GPU processing increased a stunning 100,000-fold. Gaming became a powerful technology driver. Gamers grew to billions.
and gaming pushed into all aspects of entertainment and culture. If the last 20 years was amazing, the next 20 will seem nothing short of science fiction. Today's Ampere launch is a giant step into the future. This is our greatest generation हाँ leap 65 ever. तो सबसे लंबा है. The second generation 65. NVIDIA RTX, fusing programmable shading, ray अगर बिना tracing, and DLSS के artificial तो. intelligence, gives us photorealistic graphics and the highest frame rates अबे पैसा at the बहुत same सही time. लगाया ये लोग ने. Once the holy grail of computer graphics, ray tracing is now the standard. And Ampere is going to bring you joy beyond gaming. NVIDIA Reflex to improve your response time. यानी NVIDIA मतलब Broadcast AMD turns से any बहुत room डर into लग a रहा है studio. NVIDIA को. And Omniverse Machinima turns you into an animated filmmaker. We are super pleased with 3070, 3080, and 3090, the first समझ three रहा है, members ठीक है. of the Ampere generation. फिर मेरा काम है You're उसको gonna कि क्या वो feel a स्ट्रीम boost कभी और like कोई आके never देखे तो before. उसको समझ में आए. I can't wait to go forward 20 years to see what RTX started. Homes will have holodecks. We will beam ourselves through time and space, traveling at the speed of light, sending photons, not atoms. In this future, GeForce is your holodeck, your lightspeed starship, your time machine. In this future, we will look back and realize that it started here. Thank you for joining us today, and to all of our fans for celebrating the arrival of Ampere. रिलीज डेट तो बता देता. रिलीज डेट नहीं बताया इसने. इसको रिलीज डेट बताया जैसे था कि कब मार्केट में आएगा. ये तो बता दिया उसने कि कैसा है, लेकिन मार्केट में कब आएगा वो बता देना चाहिए था. आरटी क्रॉस है. कमेंट पढ़ के देखते हैं. प्रेस एफ टू रिप्लाई. रिस्पेक्ट. होली मैन डूड्स NVIDIA फॉर विन. हाँ वो अबे 500 3060 अभी नहीं आएगा भाई. 3060 अभी नहीं आएगा. 3060 जनवरी में आएगा. और 3060 तब पता चलेगा. अच्छा सितंबर में. कितना सितंबर को बोला था? 17. To create the best graphics card of Never looked like that, but it does. stunning 100,000-fold, gaming became a powerful technology. अभी यहाँ पे देखते The powerful हैं. tensor cores हाँ ये ग्राफ render देखो यार. cinematic image. ट्यूरिंग में क्वाई कितना था? 1.5 मतलब लगभग ओके. रिलेटिव परफॉर्मेंस ओके. शैडो ऑफ टॉम रेडर डाला था वो तो इतना रिलीज होने के बाद डाला था. ये लोगों ने ध्यान देना ही छोड़ दिया. उतना ध्यान नहीं दिया. अरे चल कोई बात नहीं. Takes over 20 CPU ये cores. 50% कहाँ था? Today ये? we're announcing NVIDIA RTX IO with 80. अब यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं. रिलेटिव परफॉर्मेंस अभी 980 Ti तो ठीक है. फिर यहाँ से इतना गैप समझ में आता है. 1080 Ti से ज़्यादा नहीं हुआ. 35% इतना मैं समझता हूँ. लेकिन ये जो यहाँ से अपना जैसे अगर मान लेगा मेरे को 1060 रखना है, जैसे 1060 यहाँ होगा. देख यहाँ इधर इस पोर्शन पे. अभी रुक जा, अभी माप लेते हैं. प्रिंट स्क्रीन कहाँ है? पेंट. अरे अभी ये अपना नॉर्मल ये है ना. ये देख यहाँ पे डॉलर के हिसाब से है. तो मेरा प्राइस यहाँ पे है, लेकिन ये इतने से लगभग ये इतना नीचे है. कलर कौन सा है? वाइट कलर. ये इतना है यहाँ पे. तो मेरा अभी यहाँ से अगर जंप मारना है. ईयरफोन का माइक काम करना बंद कर दिया. किसका ईयरफोन का माइक काम करना बंद कर दिया? तेरे ईयरफोन का माइक काम करना बंद कर दिया दीपक. अभी यहाँ से देख अपन सोच रहे थे देख ये इसका तो लगभग कितना परफॉर्मेंस बढ़ रहा था. रुक Ctrl+Z. यहाँ से अपने को इतना बढ़ाना था. तो लगभग यहाँ से 1
2 टाइम्स, 2 से तो ज़्यादा, तो लगभग अभी अगर इसको अच्छे से अगर गणित से भी देख लेंगे तो रुक जा, अरे ये कूड़ा कोर होगा, दिखा नहीं रहा है रे, दिखा रहे जल्दी से, कूड़ा कोर्स नहीं बल्कि टेराफ्लॉप। वैसे टेराफ्लॉप अक्सर असल में होता नहीं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मान सकते हैं, क्योंकि अभी वो लोग ने और अच्छे से करेंगे तो और होगा। देख 3.9, देख 3.9 से, और ये बोल रहा है कि 2080 के डबल है, 2080 के डबल, करेक्ट, 2080 सुपर के डबल, ओके 2080 सुपर के डबल, 28 नहीं 2080 के 2080, यहाँ पे ऐसा लिखा, कंफ्यूज कर दिया, 2080 तो ठीक है। अभी मेरा क्या था 3.9, करेक्ट, 3 GB, तो इसको मैं निकालता हूँ कैलकुलेटर में, लेवल 4 पकड़ लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं RTX हो गया, GTX गया, 60 वाला। अच्छा अब तू आएगा कब वो बता, गांव से तू आ ही नहीं रहा यार। अब तेरा माइक खराब हो गया, माइक खराब हो गया तो तेरा 3 पिन क्या तू चाह के भी बोल नहीं पाएगा ना कि तेरा फ़ोन का माइक काम करे? ऐसा कोई सेटिंग है तेरे फ़ोन में या कोई ऐप कि माइक ईयरफोन तेरा वैसे ही काम करे, माइक वाला पोर्शन तेरा फ़ोन का काम करे जैसे 2 पिन वाला करता है? सुपर नहीं रे, ये तो और दिमाग खराब करता है। 14 2080 Ti नहीं, 2080 सही है सिर्फ, 1080 नहीं रे, 2080 यार क्या बोलूं। ऐसा नहीं बताएगा। सुपर ही बता रहा है, 2080 नहीं बता रहा। 2080 फिर भी चलो 2080 अगर जितना भी है, नहीं 2080 वैसे दोनों का बराबर, इसे 4% का फ़र्क है दोनों में। ईयरफोन 4 पिन, अबे 60 रुपये में 4 पिन वाला क्या क्या करके देते हैं रे लोग, ये लोग मस्ती बहुत करते हैं, तभी ख़राबी होता है। 3 पिन 4 पिन डालते, 2 पिन डाल के बस दे दिया होता, माइक फ़ोन का काम करता। ईयरफोन 4 पिन वाला है, औकात उसकी 1 पिन की भी नहीं है, 4 पिन डाल के रखे हैं। अब ये 2080 अगर 11 है, मतलब पकड़ लो 11 है तो इसको पकड़ लो 11 पकड़ लो, ठीक है। अब 11 22 हो जाएगा, 22 डिवाइड बाय 4 5.5 टाइम, सोच सीधा 5.5 टाइम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसने एक चीज़ मिस कर दिया। 3070 में कितना वी रैम है? 3080 पता है ना, ओके 3080 नहीं 3070, अरे at the same price. And the new GeForce RTX 3070. Let me show it to you. Ampere knocks the daylights out of Pascal on ray tracing, cool down on everything, and higher frame rate at the same time. So we double down on everything. Twice the shader, twice the ray tracing, and twice the tensor core. The triple double. Ampere knocks the daylights out of Pascal on ray tracing. And even with ray tracing on, crushes Pascal on frame rate. To all my Pascal gamer friends, it is safe to upgrade now. Yes, मैं हूँ। Amazing ray tracing games are our friends. And a super family of Turing to meaningfully exceed Pascal on game performances without ray tracing. With ray tracing turned on, Pascal, using programmable shaders to compute ray triangle intersections, fell far behind Turing's RT core. And Turing with ray tracing on reached basis. This was a huge achievement. The images are far more beautiful. They want every generation double down on everything and higher frame rate at the same time. 3070 so we double down on everything. Twice the shade. NVIDIA GeForce RTX 3080 and 970, 1070, 37. This GPU faster than the 2080 Ti
The Faster. Turing enthusiast GPU priced Faster at than 2080 Ti. $1,200. Okay, अब 2080 Ti Ladies जो and है gentlemen, the new GeForce RTX 3070. Let me show it to you. It's a work of art. 20 14.2. shader teraflops, अब ये मेरा 40 RT अभी मैं तेरे को teraflops, एक चीज बताता हूँ देख and 14.2 ना 163 teraflops tensor core for AI processing. With 8 14.2 gigabytes of G6, 3.55 ओके RTX लेकिन लास्ट टाइम 3070 जब is अपने ने किया faster था than the $1,200. अभी चुप रहे अभी जब लास्ट टाइम अपने ने किया था याद है ये टेराफ्लॉप इस तो शायद दिखाएगा भी नहीं उस समय टेराफ्लॉप यूज भी करते थे कि नहीं टेराफ्लॉप नहीं यूज करते थे क्या टेराफ्लॉप यहाँ पे यूज करते भले लेकिन वहाँ पे नहीं दिखा रहा है ये तो 1660 है ये नहीं देखने का ये देखने का मेन 1.91 ये देख 1.9 FP32 अच्छे से दिखाएगा अंदर जाके FP32 नहीं देखना अरे नेट चला गया क्या नहीं मैं सोचा है देखो स्टीम चल रहा है कि नहीं चल रहा है ढंग का ये फ़ोन नहीं मिलता देखा टेराफ्लॉप का है तो फिर भी अपने को अंदाजा है कि उसका लगभग 3 गुना था अभी अगर यहाँ पे देखेंगे अभी एक वीडियो है ये वाला नहीं सबसे अच्छा ये नहीं है ये भी नहीं है वो सबसे अच्छा ये है 660 वर्सेस 760 उसमें दिखाता है देख ये एक सबसे अच्छा वीडियो देखने के लिए कि गैप जनरेशन है देख गैप जनरेशन कितना है ए ढंग से इसमें दिखाएगा क्या आगे हाँ ये देख यहाँ पे देख अपन यहाँ से चालू किए थे और यहाँ पे गए हैं तो देख 33 और 3 लगभग 2 गुना है लेकिन 3 गुना नहीं है करेक्ट 3 गुना नहीं है लेकिन अगर अपना ये रहेगा 14 पर देख 3.55 हो जा रहा है और प्लस अपने को VRAM भी मिलेगा और RT कोर टेंसर कोर यही सही वक्त है ये वक्त गया तो गया लेकिन प्रॉब्लम क्या है अभी TSMC का 7 नैनोमीटर और अपना AMD का नावी सीरीज भी आएगा तो इन दोनों को देखने के बाद मार्केट बहुत देखना है ऊपर खड़ा लेकिन प्रॉब्लम क्या है अभी देखिए लोग क्या बोलते हैं कि 2070 प्राइस ओके अभी देखते हैं यहाँ पे 46 दिखाता है करेक्ट लेकिन यहाँ पे देखेगा असल में Amazon.in तो कितना बढ़ेगा अंदाजा लगाना पड़ेगा .com ले 2070 सुपर EVGA सेम मॉडल देखते हैं ये भी नहीं मिलेगा हाँ जोटेक अरे इसमें प्राइस नहीं लिखा है MSI 20 सुपर नहीं है सुपर का है EVGA का ही सब है सब आउट ऑफ स्टॉक हो गया इसलिए ऐसा दे रहा है फिर भी लगभग समझ ले कि 550 पकड़ के चल 550 550 600 तो अगर उसको कैलकुलेटर में करके देखें 71 चल रहा है ना देख रहा है कि नहीं दीपक देख तेरी और इंटरचेंज करेगा मैं भी ऐसे ही लिखा हूँ अरे बाप रे बढ़ गया पहले 71 था 273 हाँ तो लगभग उतना ही चल रहा है लगता है मार्केट सब ढंग से बंद हो गया देख रहा है यानी मतलब अगर ये लोग ने बोला है कितना करेक्ट RTX 2080 Ti starting at $499. बोला 5
अगर 5 होगा 74 लगा के चलते हैं 37 और अपने को इंतज़ार करना है कम से कम सितंबर अक्टूबर नवंबर। यहाँ पे AMD का इवेंट चालू होगा नवंबर में और नवंबर में सबसे बड़ा इवेंट होगा कि राइजन 4000 सीरीज़ भी आएगा और प्लस अपना ये भी आएगा RDNA। फिर उसके बाद ये नवंबर तक अपना 3060 तक निकाल सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लड़ाई होगी अपना दोनों के प्राइस पॉइंट में। फिर ये जनवरी ये वक्त ऐसा रहेगा जहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद अपना 7 नैनोमीटर पे निकालेगा ये सारे ग्राफिक कार्ड अपना NVIDIA TSMC खरीद के अभी सैमसंग पे बना रहे हैं। तो इस बार थोड़ा सा 1 साल ये लोग घसड़ देंगे बिना मतलब के। 73 हो गया है पैसा। अच्छा सुनना दीपक, तेरा फ़ोन में कितना बैटरी है? अभी अवेलेबल इन अक्टूबर, तो अक्टूबर में आएगा ना, देखा नवंबर या दिसंबर या जनवरी में, ये 3 महीनों में। मेरे को लगता है नवंबर में आ जाएगा क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, वो AMD से बहुत डर रहा है इस वक्त NVIDIA, क्योंकि उसके पास इस वक्त RDNA 50% अगर एफिशिएंसी है तो 33% पकड़ के चल। तो अपने को देख क्या पकड़ के चलना है, 5700 XT करेक्ट। ये देखते हैं अब 5700 XT का बेंचमार्क देखते हैं वर्सेस 2080 Ti। मैं बताता हूँ, ग्राफ में देखते हैं, मुझे ग्राफ देखना है। चलेगा, ग्राफ नहीं दे रहा तू भी। अभी ये जो है 1189 है तो ये ऑटोमेटिकली डबल होगा करेक्ट। तो इसने क्या बोला कि 2080 का डबल होगा 91% ना। रुक PUBG में आता हूँ, मोबाइल में ही आऊँगा, आएगा अभी मोबाइल में। तो 2080 का डबल तो 35% माइनस करते हैं, 100 माइनस 35 तो करेक्ट 65। इतना % वो फास्ट है 2080, यानी मतलब 65% इनका जनरेशन फास्ट चल रहा है। लेकिन अब AMD सीधा 100 लेके जाएगा इस जनरेशन में, क्योंकि ये 40 कंप्यूट यूनिट पे था, वो 80 कंप्यूट यूनिट पे वो सेड़ सकता है। यानी मतलब वो 5700 आज देख 89 कमज़ोर दिख रहा है इससे, इसके फ्लैगशिप से। लेकिन अगर 89 का 2 गुना कर दे 200% और 5900 XT और 3080 की TI को कंपेयर करो, अभी सब निकल जाएगा। 2080 से बोला था ना 2 गुना फास्ट है उसने, देखो 2080 से करेक्ट। ले इसमें तो लगभग बराबर घसीट लिया। ये नहीं, थोड़ा सा ऐसा गेम लेते हैं जो दोनों को ना फायदा करे। चलो ये ठीक है, 85 और 96 ये फर्स्ट केस पकड़ते हैं। तो 98 का 2 गुना कितना, 98 का 2 गुना कितना होगा वो देखना है अपने को। 98 का 2 गुना इंटू 2, ये उनका फ्लैगशिप है 196 दिखाएगा। लेकिन इनका जो है 85 नहीं 20 क्या लिखा है, हाँ 3080 जो है 2080 का डबल लेगा। लेकिन यही चीज़ अगर तू बैटलफील्ड में देखेगा तो लगभग देख इसका देख ज़्यादा हो गया देख। तो वो गेमिंग के ऊपर है, लेकिन ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट निकालेगा। जैसे 151 है देख, लगभग देख इसमें देख फ़र्क देख, दोनों उतना ही है, गेम के ऊपर है। आ जा ठीक है रुक। तो अपने को इसमें 75/2 करना है, 75/2 करेक्ट। अब 150 हुआ, लेकिन अगर यही चीज़ करेगा 87/2 तो 174 हुआ। लेकिन अभी अपन एक चीज़ भूल रहे हैं, 75/2 करेंगे 150 प्लस, क्योंकि इसने एफिशिएंसी भी बढ़ाई है, IPS इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो इसका 10% और जोड़ दें, 10% IPS इम्प्रूवमेंट 165 और उससे लो प्राइस में लो टेम्परेचर में।
तो बस प्रॉब्लम क्या है, इसके पास टेंसर कोड नहीं है। तो घुमा फिरा के एनवीडिया आगे रहेगा, लेकिन उसको बनाने में बहुत मेहनत लगेगी उसको, लेकिन इसको नहीं। चल अच्छा दीपक आ जा, अभी मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ। तो रिप्लाई मार, ठीक है चल, ठीक है चल बाय। तो मैं स्ट्रीम बंद करता हूँ, फिर आते हैं। बस रिप्लाई मार, तेरा रिप्लाई का इंतजार है। एक तो तेरा माइक भी खराब हो गया है। रिप्लाई मार, ठीक है चल बाय।